Okay guys, so in this video we're going to discuss about the relationship between internal and external range liquidity. Okay, and this is the lesson that is going to be the turning point for the majority of you basically. Okay, and this concept makes bias so easy to understand. Okay, if you're struggling to understand कि आज मेरा bias क्या है या फिर मेरा upcoming week का bias क्या है या मेरा daily bias क्या है, this topic is going to help you a lot. Okay, and all credit goes to MMXM Trader and ICT. Okay, so first we going to understand what is internal range liquidity. Okay, पहले हम लोग समझते हैं कि internal range liquidity क्या होता है. Okay, basically internal range liquidity is going to be our fair value gap और imbalance. Okay, so हम लोग internal range liquidity को define करेंगे by fair value gap और imbalance. Okay, fair value gap और imbalance दोनों same चीज़ होता है, so don't get confused. Okay, अगर किसी को पता नहीं है कि fair value gap या imbalance क्या होता है, just let me explain. So basically imbalances are three candle formation. Okay, imbalances are area on the chart where price does not have an efficient retest of price. Okay, so for example you can see on left hand side we have these three candlestick, right? One, two, three basically. Okay, and you can see this area market यहाँ पे retest नहीं किया. Okay, we created this imbalance here. Okay, so this is basically what is bullish fair value gap, bullish imbalance we say. Okay, so you can see this area, basically this blue box is our imbalance क्योंकि price इस area पे retest नहीं किया. Okay, and we call this imbalance bullish fair value gap because this is the bullish example, right? Same applies on bearish fair value gap, bearish imbalance. Okay, so here you can see we have this area जहाँ पे price retest नहीं किया and we created this imbalance in this area basically. Okay, so this is our basically bearish fair value gap, bearish imbalance. So now let's understand what is external range liquidity. So external range liquidity is going to be our old high, old low. Okay, basically जो हम लोग का मार्केट का एक हाई पॉइंट, मार्केट का एक लो पॉइंट होता है. ओके, स्विंग हाई स्विंग लो जो पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी. सो इट इज गोइंग टू बी आवर ओल्ड हाई और ओल्ड लो basically. So here you can see one example. You can see here we have this old high, right? And we have this old low. So this is going to be our external range liquidity. Okay. And if you guys have watched my video on liquidity, I discussed there liquidity rest above old high or old low. So you can see we have this old high. So above this we have buy side liquidity and below this we have sell side liquidity. Okay, so we have buy side liquidity resting above and we have this sell side liquidity resting below this low. Okay, so once market go above this old high we can anticipate कि market can reverse now, or if market go below this sell side liquidity we can anticipate market can now reverse upside. Okay, so defining internal and external range liquidity. इंटरनल रेंज लिक्विडिटी उसको हम लोग IRL भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. ओके, इज डिफाइंड बाय फेयर वैल्यू गैप एंड इम्बैलेंस, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ERL इज डिफाइंड बाय ओल्ड हाई और ओल्ड लो बेसिकली, राइट? Now this is very important point and you guys have to pay attention to this. When external range liquidity is taken, okay, once जब market external range liquidity यानी कि old high और old low market जब grab कर लेता है, then fair value gap जो हम लोग का imbalance है, fair value gap है, that we call internal range liquidity, right, is going to become the next draw on liquidity. Okay, so अगर market old high for example grab कर लिया है, तो हम लोग का जो next fair value gap होगा, market उस साइड ड्रॉ करेगा, बेसिकली उस साइड मूव करेगा. ओके, टू ग्रैब, टू बेसिकली फिल दैट इम्बैलेंस. ओके, और वाइस वर्सा व्हेन फेयर वैल्यू गैप इज टैग्ड एंड ओल्ड लो और ओल्ड हाई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बिकम्स द नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी. ओके, इन अपकमिंग स्लाइड आई विल शो यू एग्जांपल आल्सो, सो डोंट वरी, बट मेक श्योर दिस टू पॉइंट आप अपने माइंड में रखो. वंस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी इज टेकन देन फेयर वैल्यू गैप बिकम्स द नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, or once fair value gap is tagged, our old low or old high external range liquidity becomes the next draw on liquidity. ठीक है? So for example here let's see price move from the high to low and here you can see we have grabbed this external range liquidity. Okay, basically this is our what old low, right? हम लोग का ये old low था. Market, you can see market from this high to this low, market gap previous old low. So this is our external range liquidity, right?
So market grab this external range liquidity, right? Now let's say when market move from this high to this low, we created here fair value gap और imbalance, okay, जिसको हम लोग internal range liquidity भी बोलते हैं basically, right? So we created this internal range liquidity here, for example fair value gap हम लोग यहाँ पे create किए. सो अगर मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, ओके, अगर मार्केट ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है यहाँ पे, राइट, सो वेयर प्राइस कैन नेक्स्ट ड्रॉ टू, कहाँ पे प्राइस जाएगा, बेसिकली इट विल ड्रॉ टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, राइट, अभी हम लोग डिस्कस किए इससे जस्ट पहले वाले स्लाइड में. सो हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल ग्रैब कर चुके हैं, सो मार्केट इज गोइंग टू ड्रॉ टू इंटरनल नेक्स्ट, ओके, सो वी विल सी प्राइस विल मूव अप टू tap this fair value gap internal range liquidity, okay, and once we tap this internal range liquidity fair value gap, where price will draw to, it will draw to our old low, swing low, basically external range liquidity, right? So we will go from internal range liquidity to external range liquidity always, okay, that's how basically market move, that's how basically algorithm move basically, okay. So once we tap this fair value gap, we'll most likely to draw to this old swing low external range liquidity, okay. And price only does two things, okay, either it's going to draw to old high or old low, or either it's going to rebalance inefficient price action, that is imbalance, okay. तो बस ये समझो कि मार्केट एल्गोरिथम का बस दो काम है, ठीक है, either it's going to grab old swing high or old swing low liquidity, okay, और जो भी इम्बैलेंस हम लोग फॉर्म करते हैं बेसिकली मार्केट में, ओके, जो भी इम्बैलेंस, जो भी फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करते हैं, मार्केट उसको बैलेंस करने के लिए जाएगा. सो एल्गोरिथम बस ये दो काम करता है, आइदर इट्स गोइंग टू ग्रैब लिक्विडिटी फ्रॉम ओल्ड हाई ओल्ड लो, और इट्स गोइंग टू फिल द इम्बैलेंस जो मार्केट में वो इम्बैलेंस फॉर्म किया है, ठीक है. There's nothing else price does, okay? Using this understanding on the monthly, weekly, and daily and 4 hour chart is the key you have all been looking for when it comes to daily buys, okay? If you use this concept on monthly time frame, weekly time frame, daily and 4 hour time frame, is going to help you to understand कि मेरा next bias क्या होने वाला है, मेरा next draw on liquidity कहाँ है, and किस साइड मार्केट मोस्ट लाइकली मूव करेगा, ओके. इन अपकमिंग slide I'll show you example also, but make sure you note this, we're going to use this on monthly, weekly, daily and 4 hour. I personally don't use 1 hour, okay, but and that this is what I learned from MMXM trader, okay. We're going to use this concept on monthly, weekly, daily and 4 hour. So now let's see some example, okay. So here you can see we have this odd USD chart and this is weekly time frame, okay. So first of all pause this video, okay, pause करो ये वीडियो को and try to find what you can see, okay. जितने भी अभी तक हम लोग पॉइंट डिस्कस किए, can you spot any external range liquidity या कुछ ओल्ड हाई ओल्ड लो कुछ दिख रहा है या कुछ फेयर वैल्यू गैप कहीं पे इम्बैलेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ओके. पॉज दिस वीडियो एंड देन कंटिन्यू बेसिकली, ओके. So I'm going to show you guys. I hope आप लोग मार्क कर लियो. So you can see we have grabbed this old high that we called external range liquidity, right? हम लोग यहाँ पे old high external range liquidity sweep कर चुके हैं, right? You can see external range liquidity grab and where price will go next, okay? अगर price external range liquidity grab कर चुका है, so where it goes next after external, it goes to internal range liquidity, that is our fair value gap. Can you spot any fair value gap from this low to this high or imbalance, okay, from this low to this high? Because once we grab this external range liquidity, market is most likely going to draw to internal range liquidity. And what is internal range liquidity? It is our fair value gap or imbalance, okay. If your eyes went here, you are correct, okay. And if you have marked this also upper this imbalance, okay, it's also correct, but we're going to use this imbalance, okay. काफी लोग के माइंड में कंफ्यूजन स्टार्टिंग में भी आया होगा कि मेरे को कौन सा फेयर वैल्यू गैप लेना, जब मैं डिस्कस कर रहा था एक्सटर्नल टू इंटरनल बेसिकली, जब मैं लाइन इलस्ट्रेशन एग्जांपल दे रहा था, ठीक है. सो वेन एवर यू विल सी टू फेयर वैल्यू गैप, फॉर एग्जांपल वन फेयर वैल्यू गैप हियर, वन फेयर वैल्यू गैप अपसाइड, you will always going to use your Fibonacci, okay. You're going to use your dealing range to understand are we in premium level or we are in discount level, okay. So if you use a Fibonacci from the swing low, okay, for example market created this swing low, right, and this swing high, okay. अगर आप ये swing low so ये swing high Fibonacci use करोगे,
तो जो 0.5 फिब लेवल होता है 50% होता है, 50% के नीचे हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस बोलते हैं, 50% के ऊपर हम लोग प्रीमियम लेवल बोलते हैं. If we are looking for the buy setup, we look to buy at discounted price, okay? And if we are looking for the sell setup, we look for sell at the premium level. ये मैं अपने फिबोनाची वीडियो में ऑलरेडी कवर किया हुआ हूँ, okay? So if I use my Fibonacci from this swing low to this swing high, this is my 50% in this red line, okay? And you can see market 50% में ये डिस्काउंटेड एरिया में फेयर वैल्यू गैप है, ओके? एकदम मिड में बेसिकली, ओके? सो वेन एवर यू विल कंफ्यूज कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप पे अब मार्केट नेक्स्ट ड्रॉ होने वाला है, ये वाले फेयर वैल्यू गैप तक आएगा या फिर ये फेयर वैल्यू गैप तक आएगा, ऑलवेज यूज योर फिबोनाची टू अंडरस्टैंड कि कहाँ तक बेसिकली आ सकता है. रिमेंबर ऑलवेज, नोट दिस पॉइंट, प्राइस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम प्रीमियम लेवल टू डिस्काउंट टू प्रीमियम, ओके? सो राइट नाउ वी आर एट प्रीमियम, राइट? हाउ आई नो कि हम लोग प्रीमियम लेवल पे, क्योंकि हम लोग 0.5 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं, राइट? So this is premium level, and for buying opportunity we'll look for buy at discounted price. So we know कि below 50% और 50% रेंज के नीचे जितने भी लेवल होते हैं बेसिकली वो डिस्काउंटेड प्राइस होता है, ठीक है? So now we're looking for market move from external to internal basically. So what is internal? It is our fair value gap, right? You can see on weekly we grab this external range liquidity, and now we know कि market move from external to internal. So price is most likely going to draw to this fair value gap internal range liquidity basically, right? And understand this also, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम, ओके? वंस यू अंडरस्टैंड कि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में अब बेरिस होने वाले हैं, ओके? मतलब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल ग्रैप कर चुके हैं, हम लोग का ये फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस जो है ये फिल्ड नहीं हुआ है, ये बैलेंस नहीं हुआ है. सो मार्केट कैन गो टू दिस फेयर वैल्यू गैप, राइट? सो पूरा आपका वीकली बायस जब तक मार्केट इस लेवल को हिट नहीं कर जाता, इस इम्बैलेंस को हिट नहीं कर जाता, तब तक आप बेयरिश सेटअप देख सकते हो, ओके? एंड दिस वीकली टाइम फ्रेम इट इज गोइंग टू गिव यू. So whenever you wake up, whenever you go and try to find setup, you have to look for the bearish move, because you know कि market move from external to internal basically, right? So here you can see after external range liquidity strip, market next draw to our fair value gap internal range liquidity, right? So now again pause this video and try to find what you can see here, okay? Can you see something? क्या मार्केट कुछ ओल्ड लो ओल्ड हाई कुछ ग्रैब किया है, कुछ एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्विप किया है क्या अभी? So if you have marked this, you can see we have grabbed this old low, right? Again, we are at this weekly time frame, and you can apply this same thing on daily, 4 hour, monthly time frame also. Okay, so we can see here market has grabbed this old low, right? Market ये old low external range liquidity हम लोग का sweep कर चुका है यहाँ पे. So now we know कि market अगर external range liquidity sweep कर चुका है, so it is going to draw to fair value gap, that is our internal range liquidity. So can you spot any fair value gap from this high to this low? Because we know कि market external grab कर चुका है, तो next it is going to draw to fair value gap, okay? So again we'll use always this Fibonacci dealing range, okay? We'll mark always 50%, because we know कि अगर हम लोग discounted area में, so market always move from discounted to premium, premium to discounted, always mark your 0.5 fib level, okay? So you can see from this high, this low, we have this 50% range, okay? And you can see after grabbing this external range liquidity here, market go and tap this very small fair value gap, okay? And ये fair value gap basically हम लोग को exactly at 50% range में, right? You can see. So we go and tap this fair value gap imbalance. So just understand this guys, this is very important, okay? अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर वीकली में वी नो कि एक्सटर्नल ग्रैब हो चुका है, ओल्ड लो ग्रैब कर चुके हैं हम लोग, सो योर नेक्स्ट weekly bias is going to be, whole week bias is going to be your bullish, okay? Because you know कि we have this internal range liquidity that is our 50% fair value gap जो हम लोग के प्रीमियम लेवल पे, हम लोग को पता है कि एक्सटर्नल से मार्केट इंटरनल जाएगा, so we have to look for the long setup basically, okay? And that's what makes bias so easy to understand. Definitely this is weekly time frame, you have to go to lower time frame on 4 hour or maybe 1 hour daily to find the structure, okay?
क्योंकि अगर आपको सेटअप लेना है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू द लोअर टाइम फ्रेम। बट इफ यू अंडरस्टैंड कि किस साइड मार्केट ड्रॉ होने वाला है, किस साइड मार्केट मूव होने वाला है अपकमिंग डेज, अपकमिंग वीक्स, सो यू कैन लुक फॉर सेटअप only on that particular direction basically, right? So you can see after grabbing external range liquidity, we tap internal range liquidity fair value gap. Now some of you might be thinking यार हम लोग का fair value gap तो यहाँ पे भी एक था, right? ये fair value gap यहाँ पे you can see fair value gap imbalances basically in this area. So ये area हम लोग क्यों नहीं ले रहे? Basically ये area इसलिए ले रहे क्योंकि अगर हम लोग again वापस अब फिबोनाची यूज करोगे from the low, sorry from the high to the low, you can see ये जो range है, ये जो fair value gap नीचे है, ये हम लोग का discounted पे, ओके। एंड एज आई सेड मार्केट ऑलवेज मूव फ्रॉम डिस्काउंटेड टू प्रीमियम, सो अगर हम लोग सेल के लिए देख रहे हैं तो हम लोग प्रीमियम लेवल पे सेल देखेंगे, ओके, नॉट एट डिस्काउंटेड। सो दैट्स व्हाई आई अवॉइड दिस फेयर वैल्यू गैप, ओके। ऐसा नहीं है कि मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप, फॉर एग्जांपल लेट्स से मार्केट स्टार्टेड ट्रेडिंग हायर, मे बी ये फेयर वैल्यू गैप टैप करे और फिर नीचे अगेन मूव कर जाए, ओके। Not always 100% it's going to work, okay, nothing is 100% guarantee in the market, but this concept will help you so much to understand your bias, okay. So now let's continue. So now we know we tap this internal range liquidity fair value gap, okay. So we know market go from internal to external, right? We tap this internal range liquidity, that is our fair value gap, and ये fair value gap हम लोग का premium level पे था. So now we know कि market always move from external to internal, internal to external. So we tap this internal range liquidity, so where most likely we going to draw to our external range liquidity, right? You can see this old low, sell side liquidity basically. नाउ सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि ठीक है, हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप तो टैप किया, हम लोग तो अपसाइड भी ट्रेड कर सकते हैं, राइट, टू गो एंड टेक आउट दिस ओल्ड हाई जो हम लोग है यहाँ पे, ऑफ कोर्स वी कैन गो, बट इफ यू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि स्ट्रक्चर इज शिफ्टिंग बेयरिश, राइट, सो मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वी गोइंग टू ट्रेड लोअर बेसिकली, ठीक है। So here you can see we tap this internal range liquidity fair value gap. So our next draw on liquidity will be the sell side liquidity. So now I know कि market मेरा internal range liquidity weekly time frame पे tap कर चुका है fair value gap. So अब मेरे को सिर्फ bearish setup का देखना है, and I can anticipate कि next week और upcoming week जब तक market ये sell side liquidity grab नहीं कर जाता है, external range liquidity grab नहीं कर जाता, तब तक मेरे को bearish setup देखना है, ठीक है। And here you can see on weekly time frame we tap this internal, and then upcoming week we trade it lower and lower until we grab this external range liquidity, sell side liquidity, okay. And whatever I am showing you guys in this bearish example, same thing आपको जाके अप्लाई करना है बुलिश में, ओके। सो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ ये इस पे ही वर्क करता है, सेम थिंग अप्लाइज ऑन बुलिश साइड एज वेल एज ऑन bearish side, okay. So now you can see we have grabbed this external range liquidity, okay, and you can see here from this high to this low we don't have any fair value gap on weekly time frame, right? But I know one thing कि मार्केट मेरा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्विंग लो ग्रैब कर चुका है, सो अगर हम लोग कुछ स्विंग लो और ये वीकली टाइम फ्रेम पे, तो दैट्स मेक्स नाइस एरिया फॉर द लिक्विडिटी। सो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ये स्विंग लो ग्रैब कर चुके हैं, सो आई नो आफ्टर ग्रैबिंग दिस ओल्ड लो मार्केट कैन ट्रेड हायर, ओके, क्योंकि हम लोग एक लिक्विडिटी एरिया स्विप कर चुके हैं, सो वी कैन ट्रेड हायर। सो मे बी आपको वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ भी आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं दिख रहा, सो यू कैन गो टू वन लोअर टाइम फ्रेम। सो वीकली से हम लोग डेली जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, वी गोइंग टू यूज दिस ऑन मंथली, वीकली, डेली एंड 4 आवर। सो अगर मैं ये सेम चीज़ को डेली में देखूँ, सो यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। सो ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑल्सो यू कैन सी वी ग्रैब दिस ओल्ड लो दैट what we're discussing on weekly time frame, right? So daily में हम swing low, sell side liquidity, external range liquidity यहाँ पे grab कर चुके हैं, right? So if I use my Fibonacci from the high to the low, can you spot any fair value gap basically? Okay, you can see I have used my Fibonacci from the high to the low, and this is our mid range 50%. So we know market always move from discounted to premium, premium to discount, okay. So market external grab करने के बाद external range liquidity discounted area grab करने के बाद it is going to draw to premium level. So can you spot any fair value gap at premium level? If your eyes went here, you are correct, because
ये फेयर वैल्यू गैप जो है ये 50% के ऊपर है, राइट? सो मोस्ट लाइकली प्राइस इज गोइंग टू ड्रॉ टू दिस fair value gap imbalance basically, right? So we have this internal range liquidity fair value gap. So I know market grab external range liquidity. After grabbing this external range liquidity, we can anticipate price will trade higher, and it will go until it tap this internal range liquidity fair value gap, right? Also, you can see we have created this daily bullish fair value gap here, right? Daily bullish fair value gap, and still we have this internal range liquidity fair value gap untapped. So this is our draw on liquidity. We can anticipate market will trade from this low to this high until we don't hit basically this internal range liquidity. And why we looking for this area? Because it is above 0.5 fib level, premium level पे ये fair value gap है, okay? So market always do two things, as I said. It go from external to internal, okay? Either it is going to go and grab old low, old high, और जो भी imbalance है उसको balance करेगा. So we have this imbalance here. So market is going to go and fill this imbalance. Okay, so if you understand what is your daily bias, your weekly bias, you can anticipate uh, long or sell setup depend on the external internal case. Okay, so we have created this daily bullish fair value gap, so we can expect the market will trade higher to this fair value gap. Okay, and here you can see we go and grab this internal range liquidity, that is our fair value gap. Definitely अगर हम लोग वीकली मंथली और डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली वी नीड 4 आवर 1 आवर स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप टैप किए थे, राइट? डेली फेयर वैल्यू गैप टैप किए, डेफिनेटली वी हैव टू गो टू 1 आवर 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड देन वी हैव टू लुक फॉर द setup. Okay, and that's what I have covered everything on my course. Okay, so let's move on. So you can see this is the odd USD chart again. So this is weekly time frame again. So here what you can see, what you can spot here basically. So here you can see we have grabbed this external range liquidity, this old high. We have swept this old high, right? And can you spot anything? Also, we tap this basically bearish fair value gap here. You can see weekly time frame पे. Okay. So I know कि market ये old high grab कर चुका है. Okay. So market grab this external range liquidity, and also market tap this fair value gap. Okay, bearish fair value gap. But if I see on weekly time frame, or from this low to this high, I can't see any fair value gap. Okay, मेरे को कुछ fair value gap, bullish fair value gap नहीं दिख रहा है basically from this low to this high, because I know कि market का external grab किया तो mostly it is going to draw to at least internal range liquidity जो fair value gap हम लोग का है. Okay, so I can go to lower time frame, daily time frame में मैं जा सकता हूँ. Okay, so if I go to daily time frame, I can see bunch of fair value gap. Okay, after grabbing this external, you can see where price is going to drop. Okay, so we'll use again our Fibonacci. Okay, and I'm going to use my Fibonacci from the low to the high. And why I'm choosing this low, क्योंकि ये low basically ये low के बाद market काफी strongly expand किया upside. Okay, you can see here market was consolidation then expanding, but from this low markets very strongly expanded upside. So I'm going to use this low. Okay, so this is daily time frame. Remember, this is daily time frame. So you know कि अगर market daily time frame पे भी अगर let's say ये external range liquidity यहाँ पे grab कर चुका है, this candle जो ये wick दिया है, so I can anticipate कि जो मेरा upcoming day है, upcoming bias है, वो मेरा bearish है. जब तक हम लोग ये 0.5 फिब के नीचे नहीं आ जाए, जब तक हम लोग डिस्काउंटेड पे नहीं आ जाए, जब तक हम लोग जो हम लोग यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ओके, जो हम लोग इंटरनल रेंज लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप है, जब तक यहाँ तक नहीं आ जाए तब तक मेरा बायस बेयरिश है. तो अगर आपका डेली बायस ही बेयरिश है तो यू कैन गो टू लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर 15 मिनट 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड यू कैन टेक ट्रेड on you can take trade until we hit this discounted fair value gap basically, right? So this is going to be our internal range liquidity fair value gap. Why? Market always move from external to internal, and ये internal range liquidity कहाँ है? हम लोग का 50% के नीचे है, right? So here you can see market traded lower and tap this internal range liquidity fair value gap. So just imagine, just understand this concept कि market external से internal जाता है, internal से external जाता है. Okay, and once you can see कि external has been grabbed, you can anticipate कि upcoming days, upcoming week market bearish होने वाला है. Okay, क्योंकि that's how basically market move, and you have to go and
बेसिकली बैक टेस्ट दिस, ओके, आपको खुद से बैक टेस्ट करना होगा अगर आपको और अच्छे से समझना है तो। ओके, ट्राई टू गो एंड फाइंड दिस थिंग, ट्राई टू सी कि 4 आवर डेली, वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम मार्केट के एक्सटर्नल से इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेसिकली। ओके, so the end note of this video is basically for some of you it's going to be easier to spot one over the other. Okay, किसी को मे बी एक्सटर्नल से इंटरनल इजी पड़ रहा होगा ट्रेड करने में, किसी को इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ट्रेड करने में इजी पड़ रहा होगा। ओके, सो वट एवर फाइंड इजियर फॉर यू, मेक श्योर यू स्टिक विद दैट। ओके, अगर आपको एक्सटर्नल से इंटरनल ट्रेड करने में ज़्यादा इजी पड़ रहा है तो बस आप वही सेटअप फाइंड करने का कोशिश करो। ओके, डोंट फोर्स एनीथिंग। ओके, और मे बी इफ यू, or maybe for you it's easy to find internal to external, stick with that. Okay, don't complicate it. Okay, it's simple concept, it's just giving you understanding कि किस side market most likely going to draw after external or after internal tap. Okay, and if you guys want to learn in more depth, you can go and check my course. On my course, I've covered everything. Okay, how to do time frame alignment, how to trade external to internal with market maker model. Okay, how to do top down analysis, everything. And 30-day money back guarantee. I uploaded my course on Udemy. You can go and check. Okay, so yeah, that's it for this video. If you have any question, let me know in the comment. Thank you for watching this video. Take care.